students. So in this video we will talk about linear momentum, which is a subtopic of laws of motion. तो जैसे कि हमें पता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट उसका एक मोमेंटम होता है. तो अगर आपके ऑब्जेक्ट रेस्ट में है then we will say the momentum is zero. और अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम भी फाइनाइट है. सो इट इज अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग बॉडी. नाउ कैसे इसको डिफाइन करें? linear momentum can be defined as just the product of mass into velocity of the object. तो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर linear momentum डिपेंड करता है? It depends on the mass of the object and what is the velocity of the object at that point. तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिराइव करना है? अगर हम linear momentum को something p से डिफाइन करते हैं तो linear momentum can be best expressed as mass into velocity. Now coming to the next thing, what is the unit of it? SI unit में इसका unit है kg meter per second and in CGS its unit is gram centimeter per second. Now जैसे कि हमें पता है कि velocity is a vector quantity. That means इसके magnitude भी है as well as direction भी है. तो क्योंकि मोमेंटम जो है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है. और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन विल बी सोलली डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन पे है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे है, तो मोमेंटम भी होगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में. अगर वेलोसिटी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी होगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. और अगर हम लोग बोले कि we are talking about some isolated system means if acting on it is zero or if external acting on it is zero, then we can say that dp by dt equals to zero or change in momentum is equal to zero or momentum is constant. This law is named as conservation of momentum. That means the sum of total momentum of the system will remain constant until and unless you are applying any external force on it. So this is everything you need to know about linear momentum.